Hello students. In this video we are going to read our lesson number 8. Lady candidates need not apply. So before I start this lesson, I want to read these few lines so that we can understand what we are going to read. About 30% of India's computer programmers today are women, a figure that is much higher than the global average. ये कह सकते हैं हम लोग कि इंडिया कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो हैं आज के टाइम पे मोस्टली वुमन हैं एंड दैट इज़ मच हायर देन द ग्लोबल एवरेज. अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करें तो दैट इज़ मच हायर परसेंटेज. एंड वाइल वुमन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एवरी फील्ड इन इंडिया एंड ग्लोबली, in many cases they have had to fight their way in. और जो वुमेन है दे कंट्रीब्यूट वेरी वेल इन एवरी फील्ड इन इंडिया. Read on to find out what happened when a leading automobile company did not want women engineers to work on their shop floor. So in this lesson we will read कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी, एक लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी, एक हाई रैंक की जो कंपनी है, it not allow a woman engineer to work on the shop floor. Here, dear student, you may see shop floor means the area in a factory where the workers manufacture or assemble product, usually using machines. So जब एक leading company woman को मना कर देती है, then what happened in the story? We will read that. In this section number 1, it was a long time ago. I was young and bright. I stand for that narrator, that lady Sudhamurthy. So it was a long time ago. I was young and bright, bold and idealistic. Idealistic meaning is given there with a firm belief in ideals. So here narrator is saying कि काफ़ी टाइम पहले की बात है जब वो एक bright, bold और idealistic lady थी. I was in the final year of my master course in computer science at the Indian Institute of Science in Bangalore, then known as the Tata Institute. और वो उस टाइम पे मास्टर डिग्री कर रही थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में. और नाउ इट इज़ which is now known as Tata Institute. It was probably the April of 1974. Bangalore was getting warm and red gulmohars were blooming in the IISc campus. तो ये जो टाइम था ये अप्रैल 1974 की बात है. And Bangalore was getting warm and red gulmohars, these are the kinds of flowers, these were blooming in the campus. I was the only girl in my postgraduate department and was staying at the ladies hostel. तो वो बताते हैं कि सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में वही एक गर्ल थी एंड शी वॉज स्टेइंग एट द लेडीज़ हॉस्टल. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड टू कंप्लीट अ डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस. तो वो कहती हैं कि वो जो है अपनी डॉक्टरेट डिग्री पूरी करने के बाद वो चाहती थी कि वो अब्रॉड चली जाए. आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप अ जॉब इन इंडिया. मैं नहीं चाहती थी इंडिया में जॉब करना, या मैंने कभी सोचा नहीं था. One day, while on the way to my hostel from our lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board. तो जब ये narrator जा रही होती हैं अपने हॉस्टल में, तो at that time she noticed an advertisement on the board and it was a standard job requirement notice from the famous automobile company Telco, now Tata Motors. It stated that the company required young, bright engineers, hardworking and with an excellent academic background. So इसमें क्या होता है कि जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें ये बताया गया कि कंपनी को ब्राइट इंजीनियर्स चाहिए हैं, हार्ड वर्किंग और एक्सेलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड उनका होना चाहिए. तो इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट में जो है दे रखा था. At the bottom was a small line, lady candidates need not apply. So उसके बाद एक बीच में एक लाइन भी दी हुई थी एक छोटी सी, और उसमें लिखा था कि लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत. I read it and very upset. For the first time in my life I was up against gender discrimination.
तो पहली बार मुझे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके काफ़ी बुरा लगा. दो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप अ जॉब. हालांकि मेरा ज़्यादा कोई जॉब लेने में इंटरेस्ट नहीं था. आई सॉ दिस एज अ चैलेंज. लेकिन मुझे एक चैलेंज की तरह ये लगा. आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन अकेडमिक्स. मैंने अपना अकेडमिक्स बहुत अच्छा कर रखा था, बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पियर्स. मेरे जो मेल पियर्स थे, मेरे साथ जो बॉयज़ पढ़ते थे, उनसे भी काफ़ी अच्छा मेरा अकेडमिक था. Little did I know then that in real life academic excellence is not enough to be successful. पर शायद मुझे ये नहीं पता था कि academic excellence it is not enough to be successful. सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता सक्सेसफुल होने के लिए. आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई वेंट फ्यूमिंग टू माई रूम. तो उसमें उन्हें गुस्सा आ जाता है और नोटिस रीड करके वो अपने रूम पर चली जाती है. एंड आई डिसाइडेड टू inform the topmost person in telco management about the injustice the company was perpetrating. सो इस नोटिस को पढ़ने के बाद उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचती हैं कि टेल्को मैनेजमेंट का जो टॉप मोस्ट पर्सन है, चेयरमैन है, उसको वो एक लेटर लिखेंगे so that she may tell him that what the injustice is going on in his company. I got a postcard and started to write, but there was a problem. ठीक है, तो उन्होंने पोस्ट कार्ड लिया और लिखना शुरू किया. बट प्रॉब्लम थी कि आई डिडंट नो हु हैड ए टेल्को. लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि टेल्को का हेड कौन है. आई न्यू JRD. टाटा वॉज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप. आई हैड सीन हिज पिक्चर्स इन न्यूज़ पेपर्स. एक्चुअली सुमंत Mulgaonkar was a company chairperson then. I took the card, addressed it to JRD and started writing. तो उन्होंने लिखना शुरू किया. To this day, I remember clearly what I wrote. ठीक है. The great Tata have always been pioneers. Pioneers means here the meaning is given कि people who do something new much before anyone else. तो उनका मानना था कि जो टाटास हैं दे हैव ऑलवेज बीन पायनियर्स. They always do something new. They are the people who started the basic infrastructure industries in India, such as iron, steel, chemicals, textiles, and locomotives. They have cared for their higher education in India. They have cared for higher education in India since 1900, and they were responsible for the establishment of the Indian Institute of Science. और उन्होंने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी इस्टेब्लिश किया. फॉर्चुनेटली आई स्टडी देयर और मैं वहाँ पढ़ी भी. बट आई एम सरप्राइज हाउ अ कंपनी सच एज टेल्को इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. लेकिन ये जान के मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा कि ऐसी कंपनी जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी मानती है. आई पोस्टेड द लेटर एंड फॉरगॉट अबाउट इट. Less than 10 days later, I received a telegram stating that I had to appear for an interview at Telco Pune facility at the company expense. तो मैंने एक लेटर पोस्ट किया, लिख दिया और पोस्ट कर दिया और मैं भूल गई. और 10 दिन के अंदर, ये कह लो कि 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और मुझे एक टेलीग्राम वहाँ से मिला और उसमें लिखा था कि आई हैड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेल्को पुणे फैसिलिटी एट द कंपनी एक्सपेंस. कि कंपनी के एक्सपेंस पे उन्हें इंटरव्यू देने के लिए आना है. I was taken aback by the telegram. तो टेलीग्राम को देख के पढ़ के उन्हें काफ़ी शॉकिंग लगा. माई हॉस्टल मेट्स टोल्ड मी आई शुड यूज़ अ अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो बताते कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसको जो है काफ़ी मोटिवेट किया कि एटलीस्ट इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और जब फ्री ऑफ कॉस्ट जाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना जाएं. एंड बाय देम द फेमस पुणे साड़ीज फॉर चीप. और उनके लिए जो है पुणे में जो साड़ीज़ के लिए जो फेमस है तो वो जो है उनके लिए खरीद के लाए. आई कलेक्टेड 30 रुपीज़ ईच फ्रॉम एवरीवन हु वांटेड अ साड़ी. व्हेन आई लुक बैक आई फील लाइक लाफिंग एट द रीजंस फॉर माई गोइंग. तो जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, पीछे मुड़ के इन द सेंस कि पास्ट में जब मैं जाती हूँ तो मुझे काफ़ी हंसी आती है कि मैं किस रीज़न से वहाँ गई थी, टू बाय साड़ीज. बट बैक देन दिस सीम्ड गुड इनफ टू मेक द ट्रिप. It was my first visit to Pune and I immediately fell in love with the city. Fell in love means here attracted. तो जब वो पहली बार वहाँ पुणे गई तो उनको काफ़ी अच्छा लगा. As directed, I went to Telco Pimpri office for the interview. There were 6 people on the panel and I realized then that this was the serious business. So at that time when she entered into the interview room, she noticed that there were the 6 people on the panel.
and she realized that this is a serious business, it's not a joke. This is a girl who wrote to JRT. So at that time when she entered into the room, the panel were talking about कि जो ये लड़की है that is the only lady who wrote to JRT. I heard somebody whisper as soon as I entered the room. By then I knew for sure that I would not get the job. तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये जॉब तो मिलेगी ही नहीं. That realization abolished all fears from my mind. तो ये जो realization था इसकी वजह से सारा डर उनके दिमाग से निकल गया. So I was rather cool while the interview was being conducted. तो जब वो इंटरव्यू चल रहा था तो उस टाइम पे उनके माइंड में कोई टेंशन नहीं. She was very much cool at that time when she was giving interview. So dear student, in section number 2 I will send you later.